Welcome to Parenting Reset. This is Divya, your mom friend and a parenting educator. I come here every day with a question that you send it to me in my DMs. And आज का question है बहुत interesting है. A mom from US wrote to me कि मैम my son keeps disturbing the class and उसकी teacher मुझे बहुत complain करती है. Okay, the son is only 5 years old, and every day or every week I get a complaint that your child is disturbing another kids. Very honestly, when I do my one-on-ones, I have noticed that जो international clients हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा issue होता है. Why? Because Indian kids somehow, because हमारे घर में routine और structure की थोड़ी कमी है, very honestly, it goes and it transforms there in the school. Okay, and then school say the complaint starts coming. But before I even get into it, my dear, I want you to ask few questions to yourself. Okay. One, do you understand that your child's brain is still developing? Okay. What is the answer of it? Yes, right. I hope you guys understand till now. इतने time से अगर आप मेरे साथ हो, then you understand your child brain is still developing. Okay. और कितना develop होता है by the age of 4-5? Only 10 to 20%. Actually 15 to 20%, not even 10 to 20%. Okay, 15 to 20%. That means जो brain उनका impulse control, logic, self regulation से related है, वो सिर्फ 15 to 20% develop हुआ है till the age of 5. Okay, so yes, some kids are able to regulate themselves, but वो अपने आप नहीं आते हैं, उनको घर में सिखाया जाता है, उनको different scenarios में सिखाया जाता है, and they are more adaptable. Some kids take time. Maybe your child is one of them. But listen to the other part very carefully. जो भी बच्चे का रिएक्शन होता है ना, वो जनरली 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है. टीचर सिर्फ ये देख रही है कि आपका बच्चा बात नहीं सुन रहा है, और योर चाइल्ड इज रोमिंग अराउंड एवरीवेयर, और योर चाइल्ड इज नॉट सिटिंग देयर. ओके, अब ये सिर्फ लेयर 1 है, विच इज द टॉप लेयर. जो सेकेंड लेयर है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज वाई योर चाइल्ड इज डूइंग दिस. वॉट डू आई मीन बाय वाई योर चाइल्ड इज डूइंग दिस? देखो, लेयर 1 होगी कि मैम आपका बच्चा ना हमेशा दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता रहता है. दैट इज लेयर 1. दैट इज ओनली द प्रॉब्लम दैट द टीचर इज ट्राइंग टू टेल यू. योर थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि लेयर 2 क्या है, कि क्यों कर रहा है वो ऐसे. कहीं वो क्लास में बोर तो नहीं हो रहा है. Maybe he is too ahead of himself. Maybe he has friends like that, जो भी मस्ती करते हैं, but unfortunately यही फंस जाता है हमेशा. Generally, I have seen kids who get bored in the class. They are the one who are the most mischievous. या तो उनको subject समझ में नहीं आ रहा है, or they have already learned it and they are like, यार कब क्या करना है, I already understand it. If they find it interesting, they will not do something else. So your role is to go to layer 2. Layer 2 is basically what? Ki why my child is doing this, and how you're going to reach there is in consultation with the teacher. देखो, एक चीज समझो कि your role and the teacher's role cannot be independent. If you want to raise your child in a more conclusive manner, then you have to work together with the teacher. ओके, सो अगर स्कूल से कोई भी प्रॉब्लम आती है ना आपको, यू शुड ऑलवेज गो बैक टू द स्कूल इन अ वेरी लविंग वे एंड से हेल्प मी डील विद दिस विद माई चाइल्ड. मैं घर पे ये करूँगी, आप स्कूल में ये करो. ओके, सेकेंड इज, अगर आप बच्चे को सिर्फ ये बोलोगे ना कि यार तुम ये मत करो, मुझे तुम्हारी टीचर ये बोल रही है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, यू थिंक द चाइल्ड विल स्टॉप? नो, बिकॉज जो उसका लेयर 2 है ना, दैट यू हैव टू एड्रेस, वो आपने एड्रेस ही नहीं किया है. विच इज़ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, बिकॉज मे बी आई एम बोर्ड, मे बी आई नीड autonomy means I need more control over my things my teacher is not giving me. Maybe she's directing me too much, which I don't like. Sometimes children are there who are very sensory, they cannot sit at one place. Okay, children these days are, some of them are very sensory. पहले क्या होता था ना, हमारे ज़माने में बैठे रहो, कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं बोल, मतलब we had no other choice. So how would we fidget? We will take something, we'll keep doing something, we'll keep पाव उठाते रहते थे, कुछ तो भी करते रहते थे. Because some kids are very sensory. Some of them can control at a 5 year, sometimes they cannot control, sometimes they just want to get up and go around. It is the role of you and the teacher to understand the why behind the layer 1 as to ये अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है. सो लेयर 1 इज बेसिकली प्रॉब्लम क्या है.
Layer 2 is the why behind it. And layer 3, which is completely your responsibilities, that what is missing. मतलब अब बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ. What is missing, maybe what skill is missing. Maybe घर में am I giving that much attention to my child or not. Maybe घर में if my child is getting too bored, or if my child is not interested in maths or in science or in English or in some other subject, am I helping my child that much. Is there enough safety that the child feels at home कि बाहर जाके they don't have to look for attention. A lot of time children do things when they go out because they want attention, they crave attention, and they do not get that attention at home. So what they will do is they will go out and do it. Okay, so try to understand it. टीचर्स, जैसे कोई टीचर पेरेंट को आके बोलते हैं तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, द पेरेंट गेट इनटू दिस हाइपर मोड ऑफ मैं उसको कैसे सुधारूं. आपने सुधारना नहीं है, आपने अपने बच्चे की हेल्प करनी है बाय अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके नीचे के सल्यूशंस क्या है, उसके नीचे का रीज़न क्या है. ओके, प्रॉब्लम इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आपने उसके नीचे का क्या ढूंढना है कि उसका रीज़न क्या है. बोर तो नहीं हो रहा, ज़्यादा फिजिटी तो नहीं है, सेंसरी ओवरलोड तो नहीं है. व्हाट इज़ द रीज़न. And then you have to figure out ki, is there anything else that is missing. The layer 3, which is what is there anything else missing. Is he trying to do that for attention. Is he trying to do that because he doesn't feel safe there. Is he trying to do that because he's totally burned out or he's very tired. You don't know. So try to understand the reason. And also keep in mind your child is only 5 years old. They need structure at home as well. अगर स्कूल में स्ट्रक्चर है और घर में स्ट्रक्चर नहीं है, वो रेप्लिका नहीं हो रहा है, देन द चाइल्ड के नॉट प्रोसेस इट, बिकॉज उसको समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ अलाउड व्हाट इज़ नॉट अलाउड. अच्छा स्कूल में ही अलाउड नहीं है लेकिन घर में ही अलाउड है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस समटाइम्स, यू नो. सो जैसे घर में होते हैं वैसे स्कूल में भी होते हैं. अगर स्कूल में आपने उनका रूटीन नहीं सेट, सॉरी घर में आपने उनका रूटीन सेट नहीं किया है तो स्कूल में भी उनको नहीं समझ में आएगा, यू नो. अगर घर में दे डू नॉट फॉलो रूल्स विद यू, स्कूल में भी दे विल नॉट फॉलो रूल्स विद यू. अगर घर में दे डोंट अंडरस्टैंड योर नो और दे डोंट अंडरस्टैंड बाउंड्रीज, स्कूल में भी दे विल नॉट अंडरस्टैंड नोज एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड बाउंड्रीज. सो इट स्टार्ट फ्रॉम home always. Okay, with this is me Divya signing off. If you're interested to understand your children better, then I do a free parenting masterclass. The link is below. You can click there and join it, and I will tell you reasons as to why your child is behaving in a certain way, why your child doesn't listen to you, why do you shout on your child, and most importantly that one thing that your child really needs from you. And if you have any question, then drop it in the comments below and I'll take it up. This is Divya. I come here every day around 1:30 to my time and I answer your question. If you can come live, good. If you cannot come live, don't forget to like it and subscribe because you are going to find your parenting answers here for sure. Because हम parents के ना almost questions similar ही होते हैं. And I'm sure in the 1 year thing that I'm going to do this, I'm going to cover all of it. So till tomorrow, bye bye. And another thing, today is Wednesday, tomorrow is Thursday. So every Thursday on my Instagram, I go live and I answer your questions live. So if you're not following me on Instagram, then do that. The link is below in the description, and I come live every Thursday on Instagram at 11 a.m. and I'll see you tomorrow there. And here also, I'll come here to answer the question. कल का question already ready है, so I will go to answer it for you. Bye.